Jai Swaminarayan student. In this video series we are going to see the different operators in the Python. So what is the operators? The operations to be performed on the operand. Okay, so we know that in the Python there are the lots of operator we can use for mathematical purpose, for the logical calculation, for the comparison, and for the conditional statement we can use some operator. So we will see, we will going to discuss these operators one by one. So let's start. So see here, an operator is a symbol that represent an operations that may be performed on one or more operands, right? So operand is a value that is a given operator is applied to. For example, when we consider this example, 4 plus in bracket 3 into k. So this plus and multiplication, these are called as the operator, while 4 3 k, these are called as the operand. Okay, so what is a operator? It is a symbol that represent an operation. जैसे 4 plus 3 है तो we are going to see कि 4 plus 3 means what? We are going to do the addition of these two number. Okay, so through this symbol we can identify which operation to be carried out, so that can be operator. So there are the different forms of operator. One is the unary operator and the binary operator. Okay, unary operator means the name suggests unary means the single operator. For example, when we are talking about the assignment operator, just x is equal to -5. So this -5 value is stored to be in the inside the x variable. Okay, and what is the binary operator? So for example, 3 plus 10. Okay, so two operand will be there, so operation to be carried out between the two operand, that can be a binary operator, and operation can be carried out in a single operand, that can be unary operator. These are the various types of operator used in the Python: arithmetic operator, relational, logical operator, bitwise, assignment operator, and the special operator. Okay, so see, arithmetic operator, these are for the arithmetic calculation. For example, for the addition purpose, operator is plus is used. For the subtraction, minus. For the multiplication, there is asterisk mark which is on your keyboard, you can see, that is for the multiplication. For the division, single slash is there for the division. Floor division, that is a double slash. So what is the use of floor division? Floor division is used to give the approximate value nearly equal to that value. Okay, then modulus we can say that is a remainder value, it gives the remainder value. Then exponential terms, 10 to the power of 3 to the power of, that is the exponential terms, so that can be with a double asterisk mark. Okay, so here is one small example for the arithmetic operator. We will directly see in the practical. So first we have to print arithmetic operator. Here two numbers are considered. Values for the a is 10. See, this single equal to means the assignment operator. Okay, assignment means what? Whatever we are storing to the right hand side, that is a is equal to 10, so that value can be stored inside the a variable. For b is equal to 5, so value 5 can be stored inside the variable b. Okay, so first print addition means a plus b, so simply we are doing a plus b. For the subtraction, a minus b. For the division, a divided by b. Floor division, a double divided by b. Modulus is an exponent, so you will get the output like this. Okay, we will implement this through programming so that you can be better understand. So just go through it once. Okay, so floor division, that is a 2. फ्लोर डिवीजन, दैट कैन बी रैंडमाइज वैल्यू. फॉर एग्जांपल जैसे 8/4 है, 8/4 को अपन डिवाइड करते हैं, 8/4 कितना आएगा? 2 आएगा. वही अगर अपन 8.2 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं, सो वैल्यू शुड बी 2 point something, 2.00 in that case, that is a floor value. Okay, but in the floor division it will gives only the exact value, so that should be a 2 only. Okay, that is a floor division. Then relational operator, relational is used for to determine the comparison between the two operands, like who is greater, who is smaller. Okay, what is the value when they equal to. So this relation can be solved using this comparison operator. So it is used to compare value. Okay, so let's start with the first. See, here is the greater than. Okay, so this greater than, that's 5 greater than 6.
we know that 5 greater than 6, it can be a false. Okay, so result should be the false in that case. Less than 5 less than 6, it can be a true. This equal to, see here, double equal to means equal to in the Python. Okay, so 5 equal to 6, false. Okay, not equal to, that exclamatory marks and single equal to, so that is a not equal to, greater than equal to, less than equal to. So these are the various comparison operator, and we will use this comparative operator, relational operator, in the conditional statement when we are going to use if statement, else statement. In that case we are going to use this relational operator. Okay, so this is one of the example for the relational operator. We will see it again when we do the practically. Then logical operator. Logical operator, we know that this is used for the Boolean logic value. So they allow a program to make a decision based on multiple condition. For example, जैसे and operator लेते हैं तो 10 less than 5 and 10 less than 20. Okay, so 10 less than 5, so it will true if both the operands are true. So 10 less than 5 and 10 less than 20. Result should be, in this case result should be the false, क्योंकि 5 इसमें बड़ा दिखाया है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. 10 should be greater than 5 and 10 should be less than 20. Then in that case it will be the true. Okay, वैसे ही और ऑपरेशन है. और में क्या होगा, आइदर इफ कंडीशन रहेगी, आइदर दो में से एक कोई भी बराबर रहा तो इट विल रिटर्न एज ट्रू. फॉर एग्जांपल दिस इज द कंडीशन. सेम एग्जांपल दे आर कंसिडरिंग. 10 is less than 5 and 10 is less than 20. To see here, for the 10 is less than 5 condition is false because 10 is greater than 5. Okay, but when we consider 10 is less than 20, so in that case condition is true. So it will represent the true because either a condition is there, because the or operator we are using here. एक तो डायरेक्टली आप एंड लिखो और लिखो, या बाय स्पेशल सिंबल मैंने जो बताया था आपको, एंड के लिए सिंगल एंड, और के लिए सिंगल एक्सट्रामेटिव. So in that case you can use that operator also. For the not, that is the negation of that. Okay, so 10 less than 20, that is exactly true, but here not operator we are using, so negation of true, that should be a false. Okay, so these are the logical operator. Example of logical operator, we can see this example also by using the programming. Okay, so these are the logical operator. Then bitwise operator. Okay, so bitwise operator act an operand at if they are string of binary digit. Okay, so binary digit यानी 0 1 forms. Okay, that times only this bitwise operator is used. So it operate bit by bit. Okay, so पहला bitwise and देखते हैं. So A and B. Okay, then bitwise और देखो, और के लिए देखो single line. So A or B. Then bitwise not, this mark is for the bitwise not. Bitwise XOR condition is there. Okay, XOR, that is A XOR B. Bitwise right shift, अगर A राइट शिफ्ट 2 करोगे तो 2 बिट से वो शिफ्टिंग करेगा राइट साइड में. ठीक है, वैसे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, अगर लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 2 कितने बिट से करेगा, 2 बिट से, बिकॉज A लेफ्ट शिफ्ट 2 है तो 2 बिट से वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा. वी विल सी व्हेन वी सी दिस एग्जांपल, यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस. ओके, देन असाइनमेंट ऑपरेटर. These are the various type for the assignment operator. तो single equal to, it means the assigning value. Okay, plus equal to means क्या होगा, add and assign the result to the variable. For example, a is equal to a plus 1. Okay, तो वो जाएगा आपका प्लस इक्वल टू में. वैसे माइनस इक्वल टू में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेगा पहले, बाद में वो वैल्यू असाइन करेगा. जैसे a is equal to a minus 1. देन मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू मीन्स मल्टीप्लाइज एंड असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल. ओके, पहले मल्टीप्लाई करेगा, then assign the value to the variable. डिवीजन एंड असाइन, फ्लोर डिवीजन, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर जितने भी हैं उसमें सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर आपको लगाना है, इट विल वर्क इट आउट. ओके, सो दीज आर फॉर द असाइनमेंट ऑपरेटर. यहाँ पे भी लगेगा एंड और एक्स और, तो असाइनमेंट ऑपरेटर पूरे इसमें लग सकता है. ठीक है, सो एंड और मीन फर्स्ट बिटवाइज एंड करेगा, देन इट विल असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल. वैसे ही बिटवाइज और में भी वैसे ही होगा, बिटवाइज और करेगा, देन इट विल असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल.
XOR करेगा, assign the result to the variable. Bitwise right shift, assign the result to the variable. Bitwise left shift and assign the result to the variable. Okay. Then spatial operator. These are called as the identity operator, we can say. So the category for the spatial operator is should be identity and the membership operator. This operator we can use in list and tuples. When we start the collection in the Python, we will going to see these topics in detail wise. Okay. So identity operator means is not, is and is not. मतलब अगर हम एक कोई भी स्ट्रिंग देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गिव द स्ट्रिंग एज अ इनपुट, कि किसी का नाम मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये मैंने स्ट्रिंग दे दी इन्वर्टेड कॉमा में, और मुझे पता करना है कि स्टूडेंट में यू कैरेक्टर है, टी कैरेक्टर है, डी कैरेक्टर है, तो in that case I have to write this identity operator, whether D is in the string, whether D is not in the string. So in that case we can use this identity operator. Okay, so कौन से होते हैं? Is and is not, remember this. So is true if the operands are identical. Okay, अगर मैच होता है तो वो is का आंसर ट्रू में रिटर्न करेगा. अगर मैच नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्टूडेंट लिखा है स्ट्रिंग में और मैं सर्च कर रही हूँ Z के लिए, तो इन दैट केस इज नॉट विल बी द ऑप्शन बिकॉज Z इज नॉट द कैरेक्टर प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रिंग स्टूडेंट. सो इन दैट केस is not, we have to use that. Okay, in this way. Then identity operator, see one example, it is A1 में 5 लिया है हमने, B1 में 5 लिया है, वैसे A2 में हमने स्ट्रिंग ली है हेलो नाम की, B2 में हमने हेलो नाम की स्ट्रिंग ली है, A3 में हमने लिस्ट ली है, जो ऐसे ब्रैकेट में दिया रहेगा, ओपनिंग एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग 1 2 3, दैट इज़ अ लिस्ट. एक साथ हम 3-4 नंबर्स दे रहे हैं. ओके, B3 में भी हमने 1 2 3 दिया है. अब हम इसमें टाइप कर रहे हैं इफ़ प्रिंट A1 इज़ नॉट B1. A1 में क्या है? 5 है. B1 में क्या है? 5 है. तो A1 इज़ नॉट B1, ये तो फॉल्स आएगा क्योंकि वहाँ पे इज़ नॉट बोला है, जबकि वो इज़ है क्योंकि दोनों की भी वैल्यू क्या है? सेम है. तो A1 इज़ नॉट B1 है और जबकि दोनों की वैल्यू सेम है A1 B1 में, तो दैट शुड बी इज़ B1 चाहिए था वहाँ पे. सो इसका आंसर रिटर्न में क्या आएगा? फॉल्स. सो सी आउटपुट में क्या मिला अपने को यहाँ पे? फॉल्स. ओके, वैसे ही प्रिंट A2 इज़ B2, A2 हेलो, B2 की वैल्यू हेलो, सो A2 इज़ B2, यस, सो दैट इज़ अ ट्रू बिकॉज सेम है दोनों में. प्रिंट A2 इज़ B3, A2 इज़ अ हेलो and B3 is 1 2 3, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, so that should be false. Okay, so in this way we have to work for the string. Different types of collection we are using, so this operator can be used in the collection part. Okay, then membership operator, that is in and not in. Okay, what are the identity operator? Is and is not. And what is the membership operator? In and not in. Working is the same, but the difference is writing the syntax. Okay, writing the operator. So in and not in. In, true if value variable is found in the sequence. Not in, true if value variable is not found in the sequence. So these are the membership operator. Okay, for example देखो hello word हमने string दी है A में, B में हमने क्या पास किया है? टपल पास किया है. इसको टपल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि टपल में हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमने एक नंबर लिया है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग ली है, सिंगल कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग, डबल इन्वर्टेड कोड है ना, स्ट्रिंग हो जाती है आपकी. ठीक है, फिर से हमने एक स्ट्रिंग ली जिसमें हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर डाला है B, और फिर हमने फिर से इंटीजर नंबर लिया है 2, और ये जो असाइनिंग तरीका है दैट इज़ दिस ब्रैकेट, दिस रिप्रेजेंट द टपल, इसको टपल बोलेंगे. लिस्ट में कैसा रहता है? ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. ओके, तो फिर हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे H in A. H in A मीन्स H नाम का कैरेक्टर A में प्रेजेंट है.
ओके, सो दैट इज़ अ ट्रू, क्योंकि ए में देखो सीक्वेंस देखने हैं अपने को, हेलो वर्ड, इसमें जैसे एच प्रेजेंट है, क्या है, कैपिटल एच, सो दैट इज़ ट्रू। प्रिंट हेलो इन ए, अब हेलो, हेलो में एच स्मॉल है और अपने सीक्वेंस में हेलो कैपिटल है, तो दैट विल रिटर्न द फॉल्स। इन दिस वे you have to use this membership operator in and not in. आइडेंटिटी कौन से होते हैं, is and is not. Okay, this is the difference. So these are up till now. So hope you understand this different operator. We can start the programming based on this operator one by one, and once this operator get over, we can start the conditional statement. So here is the beginning of programming. Python programming started now, so you just go through this video. Hope you understand it, and if you have any query, any doubt, feel free to ask me. I will going to upload the assignment and MCQ. I already uploaded on the based on this topic. You can solve it, do the practice for this. I will tell you the lots of example for based on this operator. Okay, so thank you and Jai Swaminarayan.